everyone. In the previous video, we have discussed types of equilibria along with the conventions which are to be kept in mind while writing the expression for equilibrium constant as well as for the solving of numerical problems. अब वो conventions क्या थी कि equilibrium constant का expression लिखने में pure solid और pure liquid की concentration को हमें unity consider करना है. And if water is taken as a solvent, if solvent is taken in excess, then its concentration is taken to be constant. Now, based on those conventions, here are these two questions. Solving them, first of all, the answer 1 for the first question is, write the expression of Kc. The equation is given to us. AgBr solid is in equilibrium with Ag positive aqueous plus Br negative aqueous, means it is AgBr is added in water and that water is acting as a solvent which is taken in large quantity, means its value is taken to be constant. Now we have to write the expression for Kc. Kc is equal to concentration of Ag positive aqueous into concentration of Br negative aqueous upon concentration of AgBr solid. But by convention we know that AgBr is in pure state, so concentration of pure solid and pure liquid we have to take unity. अब क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, so we are left with Kc is equal to concentration of Ag positive aqueous into concentration of Br negative aqueous only. So this will be the expression for Kc. Starting with the second question, write the balanced chemical equation if Kc is given to us. अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल किया उसमें हमें रिएक्शन गिवन था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन थी. On the basis of that we have written the expression for equilibrium constant, जिसमें हमने क्या कहा कि that is the product of the concentration of products upon concentration of reactants raised to E power, each concentration raised to power its stoichiometric coefficient. अब इसका मतलब according to the definition, here we are having the concentration of products raised to power their stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation. In the same way, in the denominator, these are the concentration of the reactants raised to power the concentration stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation. So on the basis of this, we can write the balanced chemical equation for it. How to write it? Now we know that in the denominator, the reactants, they are there with the stoichiometric coefficients raised to their power. So we'll write it as 4NO plus 6H2O is in equilibrium, क्योंकि हम equilibrium constant का expression लिख रहे हैं, means it is in equilibrium. Concentration of NH3, sorry, we are writing the chemical equation. So for this we'll write 4NH3 plus 5O2. So in this way, from the expression of equilibrium constant, we can write the balanced chemical equation. पहले हमें balanced chemical equation दी होती थी. अगर हमें ये balanced chemical equation दी होती और हमें equilibrium constant की expression निकालना होता, तो वो हम ये लिखकर निकालते. अब हमें vice versa given था, हमें equilibrium constant का expression given था, वहां से हमें एक chemical equation निकालनी थी, वो भी balanced chemical equation, and balancing can be with the help of these stoichiometric coefficients, which are here the powers of the concentration terms in this expression. Starting with the characteristics of chemical equilibrium constant. Equilibrium constant की क्या features हैं, क्या properties हैं? It is applicable only when concentration of reactants and concentration of products have attained equilibrium. Obviously हम equilibrium constant के characteristics करेंगे, तो वो हम कब करेंगे जब reactants और products की concentrations equilibrium पे आ जाए, means दोनों तरफ concentrations बराबर हो. Next is independent of original concentration.
स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे कंसर्न्ड है, जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। सो स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, दैट डजंट मैटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कंसंट्रेशन वैल्यू। Next is definite value for every reaction at particular temperature, because we know that some reactions are endothermic, some reactions are exothermic. So accordingly, if you provide the heat, if the temperature change will be there, then it will affect the reaction also. Hence it is having the definite value for every reaction at particular temperature. Next is independent of presence of catalyst. Catalyst क्या है, the substance which help to change the rate of the reaction. Rate of the reaction means mostly the catalyst they speed up the reaction, but sometimes they also lower down the reaction also. They just change the rate of the reaction. But we are talking about equilibrium constant. Equilibrium constant ने तो अपनी वैल्यू तभी दिखानी है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर होंगे। कैटलिस्ट तो सिर्फ रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के रेट को चेंज करेगा, इधर इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम जितनी कंसंट्रेशन पे एस्टैब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उसी पर बेस्ड होगी। दैट इज व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट प्रेजेंट है या नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो कंसंट्रेशन से आएगी कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स की कितनी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट्स की कितनी कंसंट्रेशन है, एंड ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। अब वो इक्विलिब्रियम 1 घंटे में अचीव हो, आधे घंटे में अचीव हो, 2 आवर्स में अचीव हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट इज फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। की फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर वही रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली रिवर्स हो जाएगी। सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थैंक यू।